There will now be a weekly Janta Darbar, hopefully better managed than this inaugural edition. The thing that I'm finding is that in all your ministers, your houses, their offices, even your office, there are hundreds of people who come, petitioners, seeking favors. You're holding a Janta Darbar now. But how is this different from the earlier politics? This still is back to the same politics of favors and patronage. नहीं, फेवर्स तो किसी को नहीं दे रहे. जनता का काम कराना तो हमारा काम है. पर किसी रिश्तेदार को या किसी बेटे भाई को नौकरी दी हो तो बताओ. किसी को नहीं दी. बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको कह देता हूँ भैया मेरे पास नहीं है नौकरियाँ. But that's not the politics of empowerment in that sense. So we will do it ना. 10 दिन में तो एम्पावरमेंट नहीं होती है. अब इतना बड़ा एम्पावरमेंट तो कर दिया कि कोई भी आम आदमी अपना टेलीफोन यूज करके किसी भी भ्रष्ट आदमी को जेल भेज सकता है. The anti-corruption helpline. बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है. Now they don't need to walk into the CM's office. They can किसी को भी पकड़ के कर सकते हैं. But what of the AAP's promises to take on the mega scams of the Congress, now their supporting party? The anti-corruption helpline seems to be tackling petty level corruption, but you said you will take on the mega corruption of the previous regime, the Congress. Are you holding दोनों back? बीजेपी एंड कांग्रेस, एमसीडी में बीजेपी और वो कांग्रेस. Okay, but दोनों मिलके कर रहे थे. Are you holding back because the Congress is supporting you? You're not exposing big ticket corruption by Sheila Dikshit as you alleged? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप थोड़ा सा इंतजार करो. You not said a word about it? कहने की जरूरत थोड़ी है. जब हम बाहर थे तब कहते थे, अब अंदर अब करके दिखाएंगे. Our interview was recorded on a day when the Aam Aadmi Party formally kicked off its national enrollment drive. But the man who is very much the national face of the party and who is giving the other contenders a close run for their money says he is not leaving Delhi. You must have seen the recent polls which suggest that the Aam Aadmi Party is doing extremely well all over India. Why is it doing extremely well? People are fed up of the kind of politics that exists today. But why are you then reluctant to step outside your Delhi box and play a more national role? Why don't you do that? सर, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पूरे देश से भ्रष्टाचार दूर करना है. हम केवल दिल्ली से दूर करने थोड़ी आए हैं, पूरे देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे. But then run as prime ministerial candidate of the Aam Aadmi Party. You're being seen in the same league as हम लोग ये सारी की सारी कवायद राहुल गांधी. हम लोग ये सारी की सारी कवायद प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कर रहे. एक देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कर रहे हैं. मैं अरविंद केजरीवाल, मैं मनीष सिसोदिया. The Lok Sabha elections are too close to judge whether the Aam Aadmi Party can also govern, which, given the experience of what we have seen so far, may not be a bad thing.